So in today's video, I'll be going to share with you this beautiful traditional Maharashtrian look, which is very simple and easy to create. Family, this is Ankita and welcome back to my channel. And if you are new, please subscribe to my channel and also press the bell icon to get notification of my every video. So I'm sitting right in front of the window because there is a natural light and you guys can see how my skin looks like in a natural light. सबसे पहले I'm taking this Mamaearth का aloe vera gel. You can take any brand का aloe vera gel. It is very good to moisturize your face first and aloe vera gel आपके face को moisturize भी करता है and primer का काम भी करता है. Then I'm taking this foundation which is from Fit Me and I'm in the shade 220. I'll dot it all over my face and blend it with a wet beauty blender and blend my foundation all over my face. Beauty blender से finish foundation का बहुत अच्छा and flawless आता है. So I'll recommend using a beauty blender and आप finger के help से भी foundation blend कर सकते हो, but beauty blender is a much better option. Next I'm taking this LA Girl Pro Concealer and with this I'll apply it under my eye. अगर आपके फेस पे थोड़े डार्क पैचेस है तो वो हाइड करने के लिए ये कंसीलर बहुत अच्छा है. सो मैं इसे अपने अंडर आई एरिया में और जहाँ जहाँ मेरे डार्क पैचेस है वो हाइड करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस Maybelline Fit Me कॉम्पैक्ट पाउडर एंड मेरा फाउंडेशन एंड कंसीलर सेट करने के लिए आई यूज़ दिस कॉम्पैक्ट पाउडर. सो इससे केकी नहीं लगेगा अब एंड फाउंडेशन अच्छी तरह से सेट हो जाए. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस आईब्रो पेंसिल फ्रॉम ब्लू हेवन एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल आईब्रो पेंसिल है. सो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है ये आईब्रो पेंसिल और बहुत नेचुरल लुक भी देता है. ज़्यादा डार्क भी नहीं है. मैंने ब्राउन कलर का शेड लिया है एंड यू कैन सी द डिफरेंस आफ्टर अप्लाइंग आईब्रो पेंसिल. टू कॉन्टोर माई फेस आई एम टेकिंग दिस कॉन्टोर पैलेट फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक. सो आई एम टेकिंग दिस डार्क ब्राउन कलर टू कॉन्टोर माई फेस. अप्लाई इट जस्ट बिलो माई चीक बोन एरिया और मेरे जॉ लाइन पे भी अप्लाई करूँगी एंड देन ऑल्सो अप्लाई इट ऑन माई फोरहेड. कॉन्टोरिंग से ये होता है कि आपका फेस थोड़ा स्लिम दिखने लगता है. Next I'll contour my nose as well with the help of my fingers, which is very simple और मुझे fingers के help से बहुत easy लगता है contour करना nose को. Next I'm taking this blush and will apply it on my cheekbone. So next I'm using this highlighter to just give that highlighted effect on my face. Next I'm taking this eyeshadow palette from Wet n Wild and I'll take this transition shade and apply it on my crease area and then I'll take the rust orange shade and apply it just corner of my eyes and blend it properly. तो अंदर के side पे भी मैं उसे blend करूँगी. And then I'm taking this light shade बेज कलर का है एंड आई अप्लाई इट ऑन माई आई बॉल्स एंड उसके बाद आई अप्लाई दिस लाइटर शेड गोल्डन शेड एंड अगेन अप्लाई इट ऑन माई आई बॉल्स एंड देन आई ब्लेंड it properly. And again I'll take this light beige color and apply it just under my eyebrows and will also apply it on my inner corners of my eyes. And I'll take this transition color and apply it just under my eyes. Next I'll take this kajal which is from, then I'll apply eyeliner which is from Color Bar. एंड आईलाइनर मैं ऑफ कैमरा लगाऊंगी क्योंकि मैं बहुत वियर्डली आईलाइनर लगाती हूँ. नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग दिस मस्कारा विच इज फ्रॉम Maybelline. नेक्स्ट विल फिनिश द लुक विद दिस MAC लिपस्टिक in the shade D for Danger. If you like this makeup tutorial, please hit the like button and also subscribe to my channel and see you in the next video. Till then, bye.